बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब खैरियत होगी। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 लिविंग विद क्लाइमेट्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये वो बुक है जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पूरे मुल्क पाकिस्तान के अंदर शाया की है। इससे पहले इसका चैप्टर नंबर 1 आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप उसे जाकर विजिट कर सकते हैं। तो हम चलते हैं इसके एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज नंबर 1 है क्लाइमेट इज अ कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। Main case of climate change and global warming is greenhouse gases. Third, the average temperature of the English surface is increasing. Fourth, rising sea level will lead to coastal flooding. Five, increased surface temperature is called global warming. Start question number 1 है define extreme weather condition. पेज नंबर 13 के ऊपर इसका आंसर मिलेगा। Answer: extreme weather is a weather event significantly different from the average or usual weather pattern. Short number 2 है what are the two major threats of climate change? Answer: climate change is caused by an increase of carbon dioxide and other greenhouse gases in the earth atmosphere, mostly from fossil fuels emission. Third, what is the greenhouse effect? Answer: the greenhouse gases absorb some of this infrared radiation instead of its passing straight out into space. Atmosphere then emits radiation in all directions, sending some of it back to the surface, causing the plant to heat up. This process is known as greenhouse effect. ये आपके पास चार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर मुकम्मल होता है। शर्त नंबर 4 है हाउ वी कैन इम्प्रूव एयर क्वालिटी। Answer: by reducing emission over the last 2 decades, considerable progress has been made in improving air quality. Chart number 5 है define global warming. Answer: global warming refers to the rising surface temperature of the earth. The decade from 2011 to 2020 was the warmest decade ever recorded, with rising global average temperature. The long question number 1 explain the main case of climate change. क्लाइमेट चेंज होने के जो मेन केस है वो आपने बताना है। पेज नंबर 15 के ऊपर इसका आंसर मिलेगा। आंसर: मेन केस ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज रेफर्स टू द लॉन्ग टर्म शिफ्ट इन टेम्परेचर एंड वेदर पैटर्न। द क्लाइमेट ऑन द अर्थ हैज बीन चेंजिंग सिंस इज फॉर्म 4.5 मिलियन years ago. Climate change is caused by the increasing of carbon dioxide and other greenhouse effect in the earth atmosphere, mostly from the fossil fuels emission. यहाँ तक आपने इसका पहला मेन केस मुकम्मल करना है। नेक्स्ट सेकंड है ग्रीन हाउस गैसेज। द मेन फैक्टर ऑफ क्लाइमेट चेंज इज द ग्रीन हाउस स्पेस। सम गैसेज इन द अर्थ एटमॉस्फेयर एक्ट अ बिट लाइक ग्लासेस इन अ ग्रीन हाउस, ट्रैपिंग द सन हीट एंड स्टॉपिंग इट from escaping back into space or causing rise in global temperature. Deforestation is responsible for the 50% of the greenhouse gases in the atmosphere. Industrial activity. Since the industrial revolution, humans have been burning fossil fuels such as coal and petroleum of energy, which release carbon dioxide into the atmosphere. This addition of the carbon dioxide in the atmosphere is warming our globe. यहाँ तक आप अपना लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपने एक्स्ट्रा लिखना तो उसके अंदर आपको एग्रीकल्चर एक्टिविटी अदर केसेस भी आ सकते हैं, लेकिन यहाँ तक आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ वी कैन सेव आवर अर्थ फ्रॉम ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। आंसर: रेमेडीज टू ओवरकम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। पहला लेस यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। रिड्यूस द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स स्पेशली कार्बन इमिशंस। कोल इज एसेंशियल टू टैकल climate change. There are many ways to begin its process. Key action setups include not building and new coal burning power plants, indicating a phase of shadow for coal plants. The most important and feasible would be the switching a renewable energy resource. Second, the use of renewable energy source. By using renewable source of energy is more efficient. Global warming energy producing from the solar, wind, tidal biomass is more than clear and renewable. They have least effect is electricity is produced from the alternative source of energy. Use of low carbon and zero carbon technology and forestation. ये आपके पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है, आप इसमें से कम 4 पॉइंट आप लिख दिए, आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट ऑफ कराची एंड न्यूयॉर्क सिटी। आंसर: क्लाइमेट पैटर्न ऑफ कराची एंड न्यूयॉर्क सिटी. Karachi has an arid climate. It is located on the coast of Arabian Sea and as a result has a relatively mild climate. Season. Karachi has two main seasons, summer and winter. While spring and autumn are very short, summer season
persist from the longest period during the year. Rainfall: Karachi have rainy season monsoon from July to September. Climate: The city experienced two tropical climate encompassing warm winters and hot summers. Humidity: The humidity levels usually remain the high from the March to November, while very low in winter as the wind direction in winter is northeasterly. Temperature: The temperature in winter season something goes below 10 degree centigrade and day temperature is about 26 degree centigrade. ये आपने 5 पॉइंट लिख दिए, आपका इससे कराची के मतलब आपने जो व्यू देना वो व्यू आ जाता है। अब आ जाते हैं हम न्यूयॉर्क की तरफ। न्यूयॉर्क सिटी इज लोकेटेड वेयर द हडसन रिवर मीट्स द अटलांटिक ओशन. इट इज द मोस्ट पॉपुलेशन सिटी इन द यूनाइटेड स्टेट. Season in New York City: the summer and warm, humid and wet. The winters are very slow, snowy and wintry, and it's a particularly cloudy year round. Rainfall throughout the year in New York City. The month of the most rain in New York City is April with an average rainfall 3.7 inches. The month of the last rain in New York City is February with an average rainfall 2.2 inches. Climate: The climate of New York City feature a humid subtropical variety with plants of city transition into a humid continental climate. Humidity: New York City experiences extreme seasonal variation in the previous humidity. Temperature: The main season lasts from 3.5 million from the June 2 to September 16 with an average daily high temperature about 25 degrees centigrade. The hottest month of the year in New York City is July with an average height of 29 degree and low of 22 degree. यहाँ तक आप लिखते हैं, आपका व्यू न्यूयॉर्क की तरफ से भी आ जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्कस द लाइफस्टाइल ऑफ पीपल लिविंग इन कोस्टल एरियाज. आंसर: कोस्टल रीजन्स आर द होम ऑफ अ लार्ज एंड ग्रोइंग. कोस्टल रीजन वो इलाका होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है. कोस्टल and ocean activities such as marine transportation of goods, fishing, offshore energy, drilling, resource reaction and tourism and the integral to the economy of the nation. Coastal areas are also home to the species and habitats that prove many benefits of society and natural ecosystem. Climate change affects coastal areas in a variety of ways. Coasts are sensitive to sea level rise, change in the frequency and intensity of storms, increase in the precipitations and warm ocean temperature. In addition, rising atmospheric concentration of carbon dioxide are casing the oceans and absorb more to the gas and become more acidic. The rising activity have significant impact of coastal and marine ecosystem. Growing population and the developing along the coastal increase the voluntarily of the coastal ecosystem into the sea level rise. यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कंप्लीट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ रिवर फॉर ह्यूमन. आंसर: इंपॉर्टेंस ऑफ द रिवर फॉर द पीपल. वाटर: river carry water and nutrients to areas all around the earth. They play a very important role in the water cycle, acting as a draining channel of surface water. River provide excellent habitats and food for many of the earth's organisms. Many red plants and trees grow by the rivers. Ducks, revolves, other and we behave make their home on the river banks. Transport: rivers provide travel routes of exploration, commerce and recreations. Farming: river valley and the plains provide fertile soils. Farmers in dry region irrigate their cropland using water carried by the irrigation ditches from the nearby rivers. Energy: rivers are the improved energy source in the term of hydropower. Today, steep rivers are the still being used to generate hydroelectric energy through turbines. तो ये तो हमारे पास आज की वीडियो. नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसका नेक्स्ट चैप्टर करेंगे. तब तक के लिए इजाज़त. अल्लाह हाफिज़.